Very good afternoon to all the professors, students, and all the light knowledgeable persons connected with me on the session on malware analysis, which will continue for next 2 hours or 2.5 hours. Saurav sir has given my introduction to all of you, but still, for the introductory purpose, I am the founder and director of Cyber Defense Intelligence, certified as Industrial Control System Cybersecurity Expert from the USA Cyber Emergency Response Team, and of course the Red Hat certificates, some cybersecurity certificates, and acting as a cybersecurity advisor for Defense Ministry of India. So today, the next 2 hours will be dedicated to the topic of the malware. And our objective, as visible to you on the screen, are these three objectives: analyzing a malware, providing a method to eliminate, how to prevent from future infection. Okay. Uh, when we say malware, it's a very tough to give some description about it, to give some definition about it. Often many people gets confused in the term virus, trojans, worms, spyware, adware, and all. But in the layman language, any code, any malicious code that is giving some problem to you or is doing some malicious activities defined as malware. Now, it has some subcategories based on its functioning, whether it is virus, trojans, worms, spyware, adware. Now, these 4 5 are the variety of malware actually. Malware is a broader term and a broader aspect. It contains these 4 5 terminologies. Okay, so this is the flow chart. This is a flow chart that is getting shared on your screen about how to differentiate between these 4 5 categories of the various codes, that is worm, trojan, virus, or malware. Okay, let's start from the very top. Malicious purpose: if any code has a malicious purpose, yes. If it is having no malicious purpose, it is no malware. Then if the code replicates or do not replicate, on that basis you can define it as a trojan or not a trojan. And if the code infects the carrier to replicate, it is a virus. If it is not, then the code is a worm. This is a flow chart simply to define or differentiate between the 4 5 categories: the virus, worms, trojans, and a broader parent terminology that we use, it's malware. Okay, when we say malware analysis or dissecting a malware from the infected machine, it still prevention is the still the best defense we can give to it, because it's too much costly for especially for the multinational companies to disinfect the malware from the infected system, and often it costs billions or millions of dollars, millions of project to successfully disinfect the malware from the infected system. So when we say like, okay, सबसे अच्छी चीज क्या है हमें malware से save अपने आप को safe रखना है, and the best thing is the prevention, not the further analysis and the disinfection. Prevention is the best thing, and the reason for its best is, you can see the screenshot. Breach cleanup cost LinkedIn nearly $1 million, another 2 3 million in upgrades. LinkedIn systems were infected last year in the malware attack, and cost millions of dollars to the LinkedIn to clean up the systems. So obviously, in one word, you can say prevention is the best thing that you can do with the malware. Malware analysis and further disinfection is too much costly. So better if you stay safe and uh, be upgraded as far as malwares are concerned. Okay, let's go to a technical front. Today our topic is the malware analysis and dissecting malware to understand how it works, how to identify it, how to defeat or eliminate it. And obviously, malware analysis forms a critical part of the incident response. Incident response, a terminology used for immediate response that is given to the servers or given to the infrastructure of the networks when there is a security breach or when there is a any malicious activity on the servers or the systems. And malware analysis is one of the core thing that we do when there is some
activity or there are some malicious things observing on the infected system. Okay, when we say malware analysis, what actually it is? What is the malware analysis? Many people get confused with the basic core term that we use for the malware analysis. They say like ये सिस्टम malware से infect हो गया and हमें इसको चेक करना है इसमें malware है या नहीं है. No, malware analysis ये नहीं है कि आपको सिस्टम इन्फेक्ट हो गया उसको बाद में आपको चेक करना है उसमें malware है या नहीं है. What malware analysis is, you are provided with the exe or the executable code of the malware. आपको आप वो कोड आपके पास है. Now your job is to see how it malware is functioning, what is its behavior, how it propagates, how it infects, and what damage it is giving to the system, and then making the antidote of that malware. This is the malware analysis. I mean, it's not the thing that आपको सिस्टम दे दिया गया है उसको बताओ भाई इसमें malware है या नहीं है, ढूंढ के बताओ है तो कहाँ पे है. Malware analysis, this is not the malware analysis. बेसिक फंडा ही काफी लोगों का इसमें गलत हो जाता है कि malware analysis है क्या. Malware analysis is this, आपके पास जो infected malware का कोड है, it is given to you, and then onwards you are provided with the job कि ये आपके पास कोड है, इसको आइडेंटिफाई करो how it is working, how it is interacting with the windows, how it is interacting with the networks, and make a report how to prevent this malware from the further infection. Right? So the very first step, as the slide says, are you sure you want to go down this road? Malwares are like landmines, maybe something best left to trained pros. If you are not careful, you could get hurt. So the very first step when you go ahead with the malware analysis is to be cautious, to be aware of what you're doing. Because malware itself are the infected codes. If you execute without any caution or without any preparation, you will infect your system and you will end up with the damage. You can do nothing else forward. So the very first step, make your mind set up for the cautious activity. Do not execute malware code straight ahead. So what if you execute the malware without any further safe steps, or you can say the taking the care of what might go wrong if I were to begin to try to analyze malware? You might get attacked by unhappy malware authors, users. Your system could get infected, and that might result in your system being used to spam people, your personal identifiable information getting stolen, and your system getting used to this malware. Kindly give a quick view on this slide. The three terms that are used: your system being used to spam people, your personally identifiable information getting stolen, and your system getting used to this malware. So these three worst conditions can happen with you if you are going to start malware analysis straight ahead without any initial preparation. So my advice to you, without your proper technical knowledge and without making a research in malwares for at least 6 or 7 months, do not go straight ahead analyzing the infected codes in your machines. So let's say you are about to start the malware analysis training or whatever research you have. The very first step you should follow is setting up a safe environment for analysis. The very first thing you should learn, the first step before going to the malware analysis thing, the first step is the safe environment setup for analysis. Now as for the safe setup is concerned, we have three options with us. The first one is totally isolated physical system and network. Second thing is VMware. Third thing is sandbox. Now when I say totally isolated physical system and network, आपको एक सिस्टम दिया गया है वो जो टोटली आइसोलेटेड है और टोटली नेटवर्क से कनेक्टेड है, अब उसके ऊपर मालवेयर एनालिसिस आप शुरू कर रहे हो, तो इफ इट इज गेटिंग इन्फेक्टेड तो इट इज ऑफ नो यूज फॉर फ्यूचर थिंग्स. तो इन दैट केस दिस फर्स्ट ऑप्शन इज अवेलेबल, और यू कैन से ये फर्स्ट ऑप्शन जनरली बड़ी एमएनसीज ही यूज करती हैं टू एनालाइज द मालवेयर्स. बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल बाइंडिंग्स, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 15 सिस्टम्स अलग अलग लो, उनको नेटवर्क से कनेक्ट करो, दोबारा उसको सारा इन्फेक्ट करो, एंड इन्फेक्शन होने के बाद उसको वेस्ट में डालो. Norton, Symantec, these companies that are concerned with the virus or antivirus companies, these companies are concerned with making up the, doing analysis in the physical system, right?
We are taking considering this in our option that you can analyze malware in the physical system, but obviously regarding some financial problems, or you can say a normal level, you cannot use a different physical system for the analysis. So we are left with two options. Second one is the VMware, and the third one is sandbox. Okay, let's start discussion with the VMware. Everyone uses, especially in the research field and other engineering field, VMware काफी लोग use करते हैं. For what purpose? Operating system in an operating system. विंडोज के बीच में आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए VMware यूज करते हो. तो ऐसा क्या है VMware में that can help us in malware analysis? I'm sharing this slide, and you can see the first benefit of the VMware, and it states, I love taking snapshots. Now there are two things. One is the VMware workstation, and the second is VMware player. I'm talking about VMware workstation. This facility is provided with the VMware workstation, not in the VMware player. Now VMware workstation has a snapshot facility. Now what snapshot means? अगर let's say मेरा एक operating system है, I am running Windows XP, और मैं उसका snapshot ले रहा हूँ before executing the malware code. Snapshot facility is like आपका जितना environment है operating system का, पूरे environment की जो present conditions हैं, उसकी एक disk image बन जाती है. Like at present I'm giving this presentation and slides, everything, TeamViewer is running and softwares are running. If I take the snapshot at this moment, ये सब चीजें जो करंट मोमेंट पे रैम में जो है, जो हार्ड डिस्क में है, ये सब कुछ एक ISO इमेज और इमेज एक डिस्क इमेज स्टोर हो जाती है. इट्स द स्नैपशॉट थिंग, राइट? अब VMware में बिफोर स्टार्टिंग द malware analysis, malware के कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले, if I take the snapshot of this malware, it will get stored in an ISO or in a disk image. Now, let's say I executed a malware code. Let's say abc.exe is the malware code, and I executed it. After its execution, there must be some changes in the operating system. किसी फाइल से इंटरेक्शन की होगी malware ने, कुछ नई चीज कोई फाइल क्रिएट की होगी, या नेटवर्क पे कुछ एक्टिविटी की होगी. So there must be some changes or activities in the operating system. Then in the second moment, using this VMware facility, I take the second snapshot, the second moment at which the malware is working, right? So this is a facility in the VMware that makes it more comfortable to use in the malware, so that you can take snapshot and you can switch to various situations. You can see in the slides. You can switch forth and back in the situation to see the differences that occurred in the operating system. This is the first option that makes VMware a healthy, safe environment for malware analysis. Obviously, it is also isolated from your actual operating system, so it is not going to infect your, let's say you are running VMware on your Windows 7 machine, so obviously it will not going to infect your Windows 7 operating system, your host operating system, right? Being able to take a snapshot of the system state before infecting it and taking periodic snapshots throughout the analysis saves time. This functionality provides an easy means of reverting to the desired system state almost instantaneously. This is what I said, why VMware you can use it for the malware analysis. Okay, the second feature, you can say second advantage of using the malware VMware for the malware analysis is the host only option. Why? ऐसे कुछ malware ना, आपको एक कोड दिया गया है, आपको नहीं पता वो malware कैसे काम कर रहा है. आप तो एक ब्लाइंड गेम खेल रहे हो, उसको स्टार्ट करना है उसकी एनालिसिस, राइट? क्या पता वो मालवेयर नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा हो, लाइक Zeus botnet. It acts on the internet, it acts on the network. अगर आप उसको आइसोलेटेड सिस्टम में VMware में यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर नेटवर्क तो कनेक्टेड नहीं है. इट इज नॉट कनेक्टेड नेटवर्क. यू हैव वन सिंगल मशीन, इट इज नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क. तो वो मालवेयर जो एक्चुअली जिस बिहेवियर जो दिखाता है, वो आपके सिस्टम में नहीं दिखाएगा, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क. अब आप तो VMware चला के ये रिपोर्ट बना दो कि हमने ऐसा ऐसा मालवेयर है, ऐसा नहीं, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बट एक्चुअली में इट इज नॉट शोइंग द behavior it should show while it is connected to network. So VMware has a second option, that is host only option. Host only networking option is convenient for interconnecting virtual systems using a simulated network without additional hardware. This makes monitoring the specimen's network interaction easy.
A host only option say you can connect your VMware machine to your host machine or with other VMwares. So it acts like a network. That you have four, five different machines that are connected with the network. It is due to this host only option of the VMware. And वही malware code जो सिर्फ network पे ऐसे activity करता है, and you are analyzing this on this machine that has connected to the host only option, so it will act properly. Like it will show behavior whatever it should show when it is connecting to the various computers on a single network. So these two features, or should I say the three features? The first feature is VMware is quite isolated from the your host machine. If you're going to test it on the VMware, it will not affect your host operating system. The second thing is the snapshot facility. The third thing is the host only option. These three features of the VMware makes it as a perfect environment for the malware analysis, the safe environment, the very first requirement of the malware analysis. We're not doing any technical work of analysis right now. I'm just giving you a brief how to start with the setting up of a safe environment for the malware analysis. But I said कि जो आपका malware है वो आपके सिस्टम को एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है आपके होस्ट ओनली सिस्टम से. लाइक आप विंडोज 7 में VMware चला रहे हो एंड VMware के बीच में malware कोड को एनालाइज कर रहे हो. So this VMware is acting like a isolated system. But malwares are coded by the hackers and they are quite advanced. और उनको भी पता है जब malware analysis करते हैं तो जो analyst है वो ऐसे environment बनाता है, ऐसे ऐसे करता है. So they are quite aware of the techniques that a malware analyst use to do all these things. तो उन्होंने कोड को भी कुछ ऐसे तरीके से बनाया कि जो ये सब जो हमारा environment है ये सब escape कर सके. Yes, the clever code. Malicious code can detect whether it is running within a virtual system, which indicates to the specimen that it is being analyzed, hence can behave in a different manner. अब हम तो एनालाइज करने के लिए लेट्स से Zeus botnet की मैं एग्जांपल लूंगा बार बार. Zeus botnet नेटवर्क के ऊपर काम करता है, राइट. सो Zeus को मैं एनालाइज करने के लिए VMware में चला रहा हूँ फॉर द एनालाइज ऑफ दैट malware कोड. बट वो आइडेंटिफाई कर रहा है कोड दैट दिस कोड इज रनिंग ऑन अ वर्चुअल मशीन, व्हिच directly means that it is getting analyzed. कोड अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो एनालाइज किया जा रहा है. तो इट शोज अ डिफरेंट बिहेवियर देन इट्स एक्चुअल वन. एक्चुअल में वो किसी और कोई और फाइल से इंटरेक्ट करता है या किसी और तरीके से नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है. बट अब उसको पता चल गया इट इज रनिंग ऑन अ VMware मशीन, अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, व्हिच मींस दैट इट इज गेटिंग एनालाइज्ड. सो वो ऑब्वियसली वो एक तो उसका नेचुरल बिहेवियर है मालवेयर का, वो शो नहीं करेगा. तो तीन हमने एडवांटेजेस बताए VMware को यूज करने के. नाउ द डिसएडवांटेज इज दिस. सम मालवेयर, इन नॉट ऑल द केसेस, कुछ मालवेयर ऐसे भी हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं दैट दे आर रनिंग ऑन अ वर्चुअल सिस्टम एंड हेंस कैन चेंज देयर बिहेवियर as far as the malware analysis is concerned, right? And yes, I said कि VMware आपका totally isolated system है, and that statement is wrong. That statement is used for the beginners purpose. हम स्टार्टिंग में कह देते हैं VMware एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द एनालिसिस ऑफ द malwares, बट एक्चुअली में कुछ malware code can escape the VMware machine to infect your host machine, and your host machine is Windows 7 or whatever you have that you are using to run VMware. Your virtualized system software is not perfect and may allow information to leak from the virtual machine to your host machine that you didn't expect. That's the second disadvantage of using VMware. So I said when you're going to analyze the malware, you have three options. One is a physical machine that is not feasible economically, because a single person, let's say a guy who is into research without any technical support from the, or you can financial support from the university or any other organization, he can't go for this option of using physical machine for the malware analysis. Obviously, it is not economical to use 2-3 machines and making a dump of the machines after the use. No. But प्रैक्टिकली मैं अब सिनेरियो आपको थोड़ा बताता हूँ कि नॉर्टन या फिर सिमेंटिक जैसी कंपनीज में एंटीवायरस कैसे बनते हैं. वो जब एनालाइज करते हैं एक मालवेयर को, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे एनालाइज नहीं करते.
लेट्स से एक कोड है abc.exe मालवेयर कोड है, वो उन्होंने एंटीवायरस बनाना है उस वायरस का, वो उसको एक फिजिकल मशीन में भी रन करेंगे, उसकी रिपोर्ट अलग बनती है कि उस मालवेयर ने फिजिकल मशीन पे कैसा बिहेवियर शो किया, उसको VMware में भी चला के रिपोर्ट बनाई जाती है और उसको अलग प्लेटफॉर्म पे बना के भी रिपोर्ट बनाई जाती है। देन वो कंक्लूजन, तीनों रिपोर्ट्स का कंक्लूजन निकाला जाता है। So it is not like you should go ahead with only a one platform for the analysis of the malware. कि आपको VMware मैंने बता दिया, VMware से सारा एनालाइजेशन कर रहे हो, there is a possibility that malware can show a different behavior in different platforms. फिजिकल मशीन में कोई और रिजल्ट्स शो कर रहा है मालवेयर, आपके VMware में कुछ और रिजल्ट्स आ रहे हैं. So it is generally not recommended at the company level, you can say at the industrial level, to analyze malware only in one platform. For the starting research purpose, you can go ahead only with one platform. So choose physical machine or choose VMware, whatever you want. Right. So we discussed about the VMware, उसके benefits और उसके loss. Benefits तीन थे, उसके loss दो थे. Now let's talk about using a physical machine. Though it is not feasible at a student level to do analysis in a physical machine, but still, let's discuss this scenario. In this physical system, we have two softwares, Norton Ghost and UDP Cast. Norton, these two softwares are used to take snapshot. Like in VMware, you have an option of snapshot inbuilt in the VMware software. But in a physical machine, you have to install these two software, any of these software, Norton Ghost or UDP Cast. Norton Ghost is quite paid, UDP Cast is free. In the slides, you can see the link from where you can download UDP Cast. These two softwares are used to take snapshot of your physical system. I already defined what is snapshot, so snapshot क्यों लेना होता है. In VMware, the feature is inbuilt, the snapshot feature. But when you're doing analysis on a physical machine, this facility you can prevail with the help of these two softwares, the snapshot facility. Okay, we discussed two things. One is your physical machine, other is VMware. Now third term we use the sandbox. It is going to be confusing for you guys. I mean, you should pay attention to what I am saying. The sandbox and VMware, these two things or two softwares or two platforms are quite confusing in the terminologies. All right. Kindly listen carefully. What is sandbox? A sandbox in computer security is a security mechanism in which a separate, restricted environment is created and in which certain functions are prohibited. अब जो VMware की definition है, it is same as the definition of VMware. VMware भी यही कहता है. VMware मैं ये भी कह सकता हूँ, VMware in computer security is a security mechanism in which a separate, restricted environment is created and in which certain functions are prohibited. VMware की भी definition यही बनेगी. So what is the actual difference between a sandbox and a VMware? Okay. See, this is a structure of the normal Windows operating system. You have applications, you have file and settings, and driver hardware connecting with the Windows operating system kernel. And this is your VMware. VMware has independent set of drivers, files, settings, applications, everything. Totally isolated. उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है, खुद की फाइल सिस्टम सेटिंग्स हैं, खुद के ड्राइवर्स हैं. No files and no drivers are shared from the host operating system. Let's say Windows 7 is the host operating system, right? So this is a difference between your normal operating system and operating system installed with VMware, right? So let's see about sandbox, and this is a sandbox. Sandbox is isolated, yes, but the difference is it shares the files and settings from your host operating system. See a larger cylinder in the right side. The sandbox is written. Now it is sharing the files and settings of your host operating system, but still it is isolated environment. See the difference between this, a total different isolated system with applications, files and settings and drivers, and this. It's isolated, but still it is using files and settings of your host operating system.
So we discussed two things. One is a VMware and physical machine as a safe environment for starting the malware analysis. The third thing is the sandbox. And believe me, it is the best thing that you can use for the malware analysis that is made till now. Sandbox is the ultimate thing that you can use for the malware. I don't recommend VMware and physical system for the malware analysis thing, but sandbox is quite preferable compared to all these two. We can discuss it why. All right. So these two are the widely used sandbox available in the internet, Sandboxy and Cuckoo. Now, when I say Sandboxy, it is just a normal sandbox. Cuckoo, Cuckoo just being a sandbox, it also has some automatic malware analysis features. Cuckoo is quite preferable and has a lot of files, or you can say operations or features available inside it for the analysis of the malwares. So this 20-30 minutes was a talk of how you can set up a safe environment for the malware analysis. And you have three options: physical, totally isolated physical machine, you have VMware, you have sandbox. Now the thing comes to a technical level, how to do the malware analysis. And let's start with the malware analysis techniques. Okay, so broadly we classify the malware analysis in two categories. The first one is the static analysis, and the second one is the dynamic analysis. In static analysis, we are not going to execute the malware code. And here is the difference between a static and dynamic. स्टैटिक में आपको मालवेयर कोड दे दिया गया है, आपको उस पर रिपोर्ट बनानी है कि उसका एंटीवायरस कैसे बनाना है, उसको कैसे रोकना है वो मालवेयर को, तो आप उसकी स्टैटिकली उसकी रिपोर्ट बनाते हो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते. बट व्हेन आई से डायनामिक एनालिसिस, यू आर एग्जीक्यूटिंग इट, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो. You execute the malware code and compare the situation you see after executing and before executing it, and then make a final report. So broadly classified, the two techniques, one is static analysis, the other one is a dynamic analysis of the malwares. In static analysis, you examine the malware without running it, and in dynamic analysis, you run the malware and monitor its effect, how it affects the actual host machine or how it affects the virtual machine, and then you conclude a final report in your malware analysis. The basic difference between static and dynamic is just one, that you are executing it and you are not executing it. That's it. Okay. So the broader two categories, static analysis and dynamic analysis. Let's start with the static analysis of the malwares. In static analysis, as I said, you are not going to execute it, you are not going to double click it, you are not going to execute in your any system. आपको बिना execute किए analyze करना है, and the techniques that we use in the static analysis are these shared with you on the slides. First one is hashing, second one is AV tools. Now the full form is of this AV is antivirus tools. Now don't confuse the AV tools with the other antivirus companies. The third thing is packers. Fourth is strings. The fifth one is PE headers, right? So these are the 5 techniques that we use in the static analysis. These are the basic techniques. Actually में ये companies या फिर Norton या Symantec जो वायर्स के ऊपर काम करती हैं उनमें नहीं use होती techniques. These are at the basic level. You can start with. Starting point is this sort of malware analysis, that is static analysis, hashing, AV tools, packers, strings, and PE headers. Let's discuss the first thing, hash. Everyone is aware of hash. What is hash? It's an irreversible encryption technique. एक बार encrypt हो जाए फिर दोबारा decrypt नहीं होगी. Popular one are MD5, SHA-1, SHA-2 are the popular one, right? But in the, you can say, malwares or in the virus world, MD5 is more popular than anything else, right? So the first technique of the static analysis is the hashing. It is not actually a technique. आप
उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको बस MD5 हैश वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो जो आपको EXE कोड मिला है, एंड कंपेयर इट ऑन द डेटाबेस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप जो मालवेयर कोड आप एनालाइज कर रहे हो, जिसकी हैश वैल्यू आपने निकाली है, there is a probability that the same hash value has is in a database of some company. मे बी आपको इंटरनेट पे सर्च करो, वो हैश वैल्यू आपको किसकी मिल जाए, सो यू डोंट नीड टू स्टार्ट द एनालिसिस, वो किसी कंपनी ने डाटाबेस में अपने ऑलरेडी रखी हुई। दैट्स व्हाई आई से कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज नॉट एक्चुअली यूज्ड इन द कंपनीज एट द ग्राउंड लेवल। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी beginning of the malware analysis, you are new to this domain, these techniques can be useful to you, but in the industrial level these are not actually used, right? So the first thing is unique identifier. Hash is a unique identifier, mostly use MD5. The tools that you can use for this MD5 deep, it's an open source tool, or the hash calculator. In hash, you take the samples of your known malware code and you can compare the same hash values with the other values available on the internet. There is a probability that वो आपको hash value match कर जाएगी किसी के साथ और आपको पता चल जाएगा ये malware कौन सा। But that's a rare case. Only when कि आप वो कोड एनालाइज कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी ने कर रखा है, बट एक्चुअली में इंडस्ट्री लेवल पे ऐसा नहीं होता, राइट? इस एवी इंजन, अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंटीवायरस इंजन एंड अ सिंगल एंटीवायरस। एंटीवायरस तो क्या है कि अगर मैं सिमेंटेक का कोई यूज कर रहा हूँ, क्विक हिल यूज कर रहा हूँ या फिर कोई और एंटीवायरस यूज कर रहा हूँ, वो अपना डाटाबेस अपडेट करेगा क्विक हिल से, और या मैं अगर नॉर्टन यूज कर रहा हूँ वो अपना डेटाबेस अपडेट करेगा फ्रॉम नॉर्टन। But what AV engines are, AV engine is a search engine of database of nearly all companies of the virus industry. ये एक सिंगल डेटाबेस को सर्च करता है। virustotal.com is one of the popular website. It's an AV engine, antivirus engine. It search your input with the database of nearly all the companies that are associated with virustotal.com. So there is a possibility, more possibility, that you can find your hash value being compared with any other, you can say match with any other value that is input by the companies that are working on this same malware. If the file being examined is a component of well-known malware, there is a chance that it will be recognized as such by antivirus software. Websites like virustotal.com allow you to upload files and have them scanned by a wide variety of virus scan engines. Right? So we are discussing static analysis. We are not executing any malware code. हमारे पास code है, उसको statically analyze करें, हम उसको execute नहीं करें. So two things we discuss. One is the hashing, उसकी hash value लेके उसको already internet पे database के साथ check किया. And the second thing is उस file को हमने virustotal.com open करके उसमें upload कर दिया. वो जो antivirus engine है, it will compare with the database of the all antivirus companies. Simple है काफी. It's too much simple. और वो एक्चुअली ये दो तीन चीजें इंडस्ट्री लेवल पर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती. It is just a beginning point for you to dive into the malware analysis domain and make more research into it. Okay, let's increase our level of study of the malware analysis. The second thing that I am going to discuss is the packers. Malwares are made by the professional hackers and they are quite clever when they are making the malware code. तो व्हाट दे डू इज, उनको भी पता है कि जो मालवेयर उन्होंने इंटरनेट पे स्प्रेड करना है वो किसी ना किसी टाइम पे तो कंपनी उसको स्टडी करेगी और उसकी मालवेयर एनालिसिस होगी. तो व्हाट दे डू इज दे यूज सम compilers, or you can say some software, some binders. In our terminology we will use the term packers. They use the packers to compress the malware code in an attempt to make it more difficult to analyze. तो compress कर देते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू सी कि एक्चुअल फाइलें उसमें कौन सी हैं, किन एक्चुअल फाइलों से इंटरेक्शन हो रही है. कुछ हद तक रिजल्ट्स हमें नहीं अच्छे मिलते, बट स्टिल देयर आर सम टेक्निक्स दैट वी कैन अवॉइड दिस सिचुएशन. व्हेन ए पैकर compresses, encrypts or otherwise modifies an executable program, the program looks much different from static analysis perspective but still runs as it did before it was packed. एनालाइज के टाइम पे तो वो एक्चुअल बिहेवियर शो नहीं करता, या फिर एक्चुअल जो फाइलें उसमें हैं हेडर में है, या फिर कुछ भी कोड इंपोर्ट करवा रहा है, कोई फाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, एनालाइज के टाइम पे है हमें वो दिखती नहीं है.
बट जब वो malware execute होता है, then it shows the actual behavior, same as it did before packing. These are some things that are, you can say, techniques that are used by the malware coders to escape the analysis techniques, right? If executable file is packed, you will observe very few strings and functions getting loaded. Let's say मैंने एक C प्रोग्राम लिखा है, उसमें बाहर कुछ DLL फाइल्स या फिर कुछ और फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ। C में मैंने मालवेयर कोड लिखा है, मैं वो सब फंक्शंस बाहर के इंपोर्ट करवा रहा हूँ, एंड मैंने पैक कर दिया उसको रिगार्डिंग कुछ प्रोफेशनल कंपाइलर्स या फिर कुछ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैंने उसको पैक कर दिया। सो व्हेन आई एम एनालाइजिंग दैट पैक्ड कोड, मुझे वो सब फंक्शंस या वो सब जो फाइल्स मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हैं वो मुझे विजिबल नहीं होंगी। So obviously it's a hindrance to you when you are analyzing a malware. Often it is used by the hackers to pack the malware code with the help of packers. All right. So this is a screenshot that I shared with you on the slides. How the actually the packing is taking place. The code is compressed like a zip file. This makes the strings and instructions unreadable. All you will see is the wrapper, small code that unpacks the file when it is run. That's the actual screenshot defining how the packing is taking place and how it is proving to be a hindrance when you are analyzing a malware. So being a malware analyst, you should be knowing to the fact that जो आपकी पैकिंग है, you can detect कि वो malware core पे packers use हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं, then how to unpack the malware code. PEID is an open source software. It's a small software, free program. It's an open source thing, and has signatures for 600 different compilers and packers. उसके पास ये सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट 600 कंपाइलर्स एंड पैकर्स के सिग्नेचर्स हैं। अगर उन 600 में से कुछ कोई एक कंपाइलर या फिर प्रोग्राम पैकिंग के लिए यूज हुआ है, देन इट कैन आइडेंटिफाई एंड आल्सो कैन अनपैक द पैक्ड कोड। एंड वेरी स्मॉल पॉसिबिलिटी इज देयर दैट कि इन 600 में से बाहर कोई और पैकर यूज किया गया होगा। So PEID is the perfect open source tool that can identify if the malware code is getting packed. अगर packed है तो उसको unpack करने के लिए. So this is a very initial step. This is the very first step in your malware analysis. You can't go analyzing it straight away if you don't know whether it is packed or not. अगर packed है, then unpack the malware code, and then comes to a second step of the malware analysis. Strings. Now what happened अगर आप whosoever is listening on this lecture, किसी ने अगर किसी टाइम पे सॉफ्टवेयर बनाया हो, खुद डेवलपमेंट की हो किसी सॉफ्टवेयर की, एक सी फाइल तक सब कुछ, यानी ही नोस की पूरे एग्जीक्यूटेबल कोड में कहीं ना कहीं स्ट्रिंग रह जाती है, रीडेबल फॉर्म। अब आप एज सच एक्सी फाइल को हेक्स एडिटर में देखोगे या किसी और व्यूएबल प्रोग्राम में देखोगे, देन यू कैन ओनली सी द हेक्स कोड और मशीन कोड इन अ कोड दैट इज नॉट रीडेबल एक्चुअली। आप उसको ह्यूमन उसको रीड नहीं कर सकता, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पूरे कोड में कुछ ऐसी क्लूज और यू कैन से हिंट, आपको कुछ ऐसी लाइनें, वर्ड, स्ट्रिंग्स आपको क्लियर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिख सकती हैं, दैट कैन गिव अ क्लू टू यू दैट कि वो मालवेयर कैसे काम कर रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने एक मालवेयर है, मैं ज़्यूस की एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने बताया कि नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है। ज़्यूस को मैंने एनालाइज करने के लिए पूरा उसका कोड देखा, खोला उसको, मिलियंस ऑफ लाइंस का कोड है, उसमें से 80-90% लाइंस मैं पढ़ नहीं पा रहा, 15% कुछ बहुत थोड़ी बहुत पढ़ पा रहा हूँ मैं। उसमें से सिर्फ पूरे इतने मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड में सिर्फ मेरे को एक स्ट्रिंग ऐसी दिखी जिसमें आईपी एड्रेस लिखा हुआ, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ व्हाट इट इज। लेट्स से द आईपी एड्रेस आई फाउंड इज 14.1.2.5 व्हाटएवर इट इज। So I got a clue that this malware is interacting with this IP address. Strings is nothing but the readable forms that you can read in a whole executable code. You can get a hint that this malware is acting like this way. If the malware में कुछ और चीज मुझे पढ़ने को मिल जाती, कुछ छोटा सा कोड,
लेट्स से प्रेस ओके, प्रेस ओके ह्यूमिडेटेबल फॉर्म में पूरे हेक्साडेसिमल में मेरे को दिख गया प्रेस ओके लिखा हुआ है. So I can get a clue that this malware code is making some pop-up on execution और उस पे लिखा आता है press OK. Things are nothing that these things just provide you the clue how the malware analysis, how the malware is actually working. Sometimes status strings or error strings embedded within the program can give us useful information about the malware. Embedded strings can be extracted out using a variety of tools. Now these are three tools that you can use to extract the strings out of all the full code of the malware. Sysinternals पता है किसी को क्या होता है? Anyone from all of you? Sysinternals? No. Sysinternals is a package of the small tools provided by the Microsoft for the support of the Windows. Microsoft की वेबसाइट पे जाओगे, उन्होंने सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, more than 20-30 सॉफ्टवेयर, small softwares, hardly of 1 or 2 MB, that are provided to you as a support for the various Windows operations. Sysinternals पूरा पैकेज है, Microsoft के Windows में मिल जाएगा. And strings is one of the small software provided by the Microsoft Windows that can help you in this case. It can extract out strings out of the whole executable code, and you can get a hint or you can get a clue how the malware is working. Right. The second software is Bintext Functon. The third one is Hex Workshop. I recommend Hex Workshop. It is quite user friendly. It is in GUI, graphical user interface. Strings that are provided by the Microsoft Windows. It works in the CMD, command based tool it is. So I recommend Hex Workshop for the beginners when they are going to analyze the malware code. Hex Workshop is in GUI format. This is a screenshot that you can have. Reveal clues, IRC commands, SMTP command, history keys. मैंने example ली IP address की या फिर press OK string आपको मिल गई. क्या पता आपको कोई ऐसी SMTP की command मिल गई. Simple Mail Transfer Protocol, SMTP. So if you are getting some command of SMTP while extracting out the strings, you can get a clear-cut idea that malware कुछ हद तक वो mail के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, emails के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है. तो malware analysis में nothing is like a perfect. एक चीज आपने कर ली वो आपका perfect conclusion उसके basis पे नहीं निकाल सकते. You have to go through various variations. A string is one of that thing that आपको clue दे सकती है, but still it is not perfect. You have to follow the next steps while doing malware analysis. Right. So two things that we discussed right now. The first one is the hashing, then antivirus engine, then the strings. And these three were in the category of the static analysis. Now the fourth one is the PE file format. जब कोई सॉफ्टवेयर विंडोज में बनाया जाता है तो उसकी exe फाइल बनती है, राइट. उसके साथ साथ PE इज द पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल. PE हेडर होता है उसमें. Now what PE header contains, it contains the metadata of your exe file. From the word metadata I mean the data like कि वो फाइल कब बनी, कब कंपाइल की गई, किस टाइम पे कंपाइल की गई, and other things related to that exe files, the metadata of the exe, and it is stored in the PE file format. PE is a portable executable file format. PE header कहते हैं उसको. It is a format used by executable files on Windows systems. A lot of information can be extracted by examining the metadata of PE formatted file like data and time of compilation, functions imported and exported by the program. And yes, आपका कोई exe फाइल है उसमें काफी DLL फाइल्स इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं. तो DLL फाइल्स आई गेस जो विंडो के ऊपर काम करते हैं, दे नो व्हाट आर DLL फाइल्स. DLL आर कर्नल फाइल्स जो आपकी इनपुट लेती हैं या कुछ आउटपुट लेती हैं. व्हाटएवर द वर्क इज गोइंग थ्रू एट द ग्राउंड लेवल, वो DLL फाइल्स कैरी आउट करती है, राइट. So this PE header contains date and time of compilation, functions imported and exported by the program. Analyze what kind of DLL files are getting used for this, right. आप अगर PE header को ही एनालाइज कर दोगे ना, 60% इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल सकती है दैट वो मालवेयर कैसे काम कर रहा है.
and date and time of compilation, how किस टाइम पे कंपाइल हुआ, किस डेट को कंपाइल किया गया वो मालवेयर कोड, राइट, कौन से फंक्शंस इंपोर्ट कर रहा है, कौन सी डीएलएल फाइल्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा है. और डीएलएल फाइल्स plays an important role while you are going to analyze the malwares in the Windows systems. Right? So tools that were used while analyzing the PE header or PE file format of the malware exe code is PE view. The second one is dependency walker. Right? Let's discuss the dependency walker. डिपेंडेंसी वॉकर नाम अपने आप में एक चीज बता रहा है, डिपेंडेंसी, वो जो मालवेयर का exe कोड है, लेट्स से abc.exe, उस exe की किस किस फाइल्स या किस किस डीएलएल फाइल्स, कौन सी रजिस्ट्री फाइल्स, किसके साथ क्या डिपेंडेंसी है टू एग्जीक्यूट. ऑब्वियसली अगर मालवेयर बनाने वाले ने उसमें डिफाइन किया कि ये फाइल इंपोर्ट करवानी है तभी ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ये फाइल एक्सपोर्ट करनी है, वट एवर द कोड इट इज. सो इट शोज द डिपेंडेंसी कि वो मालवेयर का जो कोड है उसकी किस किस के साथ डिपेंडेंसी है, right? किस रजिस्ट्री के साथ डिपेंडेंसी है. So dependency walker is a tool. It's again an open source tool that you can use to check the dependency of the malware code. Yes, it shows dynamically linked functions. Normal programs have a lot of DLLs. Malware often has very few DLL interaction. Obviously, अगर कोई malware का code लिखा जा रहा है तो hackers are quite known to the fact that how we analyze the malware code, what are techniques we use. So they often include very few DLL files, so very few interaction you can see with the DLL files while analyzing a malware code. But still, अगर आपको एक भी पता चलती है तो it's of great use. Let's say abc.dll फाइल के साथ इंटरेक्शन आपको पता चल गई डिपेंडेंसी वॉकर से कि ये फाइल इस DLL फाइल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, एंड मुझे ये पता है कि abc.dll फाइल कीबोर्ड से इनपुट लेने के काम आती है. लेट्स सी, आई नो वो जो DLL फाइल है विंडोज की वो क्यों, कैसे, उसका काम क्या है, वो कीबोर्ड से इनपुट लेने में काम आती है, और मेरे को डिपेंडेंसी वॉकर से पता चला कि ये मालवेयर abc.dll फाइल के साथ इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है. सो इट इज वेरी क्लियर दैट abc जो आपका मालवेयर कोड है वो की लॉगर है. की लॉगर की आपको जो आप जो भी कीबोर्ड में इनपुट कर रहे हो वो चोरी करके किसी और के पास भेज रहा है, because it is using the abc.dll file and that DLL file is used to get the input from the keyboard. So it's a great use to study the PE header of the exe file. It contains a lot of metadata about the exe malware exe code. This is a screenshot that I shared. Now here the malware is with the name of services.exe. In a dependency walker, you can see all the DLL files it is interacting with. And if you know all the functions of these DLL files, जो इसमें लिस्ट हो रही हैं या कुछ और important files हैं, there is some cramming part in the malware analysis, and that cramming part is you have to study about DLL files, कौन सी DLL files किसके साथ interaction बना रही है, so that कि आप जब dependency walker में you are checking it कि कौन सी DLLs के साथ interaction हो रही है, so it should strike in your mind कि yes, this file is used for this purpose and malware is making interaction with this file, so it is very obvious that malware purpose is this, right? This is a sample screenshot where the actually services.exe is the malware. नाम उसका यहाँ पे services.exe है. To confuse the normal persons, because services Windows की अपनी एक फाइल भी होती है जो उस टाइम पे प्रोसेस चल रहा होता है. And also you can observe the imports and exports that exe code is making with. That's another screenshot from the dependency walker. In the first tab, you can see the imports, and the second tab will show you the exports. So now the game comes at higher level. You should know which registry file, which function or which DLL file जो आपके विंडोज में है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका काम क्या है. If you are not known to those facts, then you cannot understand the working of dependency walker, what it is saying. So these are some common DLL files. I should recommend you to note it down because this is something refined part out of my research. This is something refined. ये मैंने common जो DLL files हैं जो मेरे को observe होती हैं
when I go for the malware analysis, these are some common files. Otherwise, there are a lot of DLL files in the Windows operating system, more than 1,000. Kernel32.dll. This is a very common DLL that contains core functionality such as access and manipulation of memory and files in hardware. All right. Yes. Focus on the third file, user32.dll. In user32.dll, it says this DLL contains all the user interface components such as buttons, scroll bars, and components for controlling and responding to user actions. अगर मुझे मालवेयर डिपेंडेंसी वॉकर से ये पता चला कि वो मालवेयर DLL फाइल के साथ इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो आई कैन गेट अ हिंट दैट हमारे इनपुट और आउटपुट सिस्टम से वो मालवेयर का कुछ कनेक्शन है. इट इज वर्किंग ऑन दैट लेवल. These are some 4 common DLL files, and some these three will be very useful to you when you are going to analyze the malware. Let's talk about the third one, Vininet.dll. Now this DLL contains higher level networking functions that implements protocols such as FTP, HTTP, and NTP. Now इसका फायदा क्या हुआ ये सब डिपेंडेंसी देखने का? फायदा ये हुआ, लेट्स से vnet.dll है. This DLL file, I observed that it is getting used by the malware. So my research gets more focused. This DLL files interacts with the network level things, FTP, HTTP and all. So मुझे इतना clear हो जाएगा that this file is malware is something objective to the internet things. उसका अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं है या उस पर कुछ malicious एक्टिविटी नहीं कर रहा. It is objective with the internet level things. So my research or my analysis gets more focused. Now I should make more focus or more research into the network things that malware is doing, not on the Windows operating system. So knowledge of having DLL files give you a great boost when you're going to start the malware analysis. That you should know which DLL files is used for which purpose, so that you can get a hit when you observe any DLL file getting used by the malwares. Right. This is a sample example. Right? I am using keylogger. Keylogger, I guess everyone should know what the keylogger do. आप कुछ भी इनपुट देते हो सिस्टम पे, अगर आपका सिस्टम कीलॉगर से इन्फेक्टेड है, इट सेंड्स योर कीबोर्ड इनपुट. आपके कीबोर्ड का सारा इनपुट किसी सर्वर या फिर किसी हैकर के पास जाता है. इट इज अ फंक्शन ऑफ द कीलॉगर. जो इन्फेक्टेड बैंक की वेबसाइट खोलते हो, उन्होंने वहां पे वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन दी होती है. यू ऑब्जर्व्ड इट, वर्चुअल कीबोर्ड इन द बैंकिंग वेबसाइट. Why they have given a virtual keyboard option? Because they know there are some users that have keylogger infected systems. तो अगर वो पासवर्ड वो कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, दैट कीबोर्ड इनपुट विल बी sent to the hacker. Why this malware? Now this is a sample malware keylogger. How it functions: imports user32.dll. User32.dll is a DLL that is used to get the input from the keyboard. अगर मैं dependency walker में मुझे दिख रहा है कि ये exe कोड user32.dll के साथ interaction create कर रही है, so I am quite confirmed that it is a keylogger. Imports user32.dll and uses a function set window hookx, which is a popular way keylogger receive keyboard inputs. It exports low-level keyboard proc and low-level mouse proc to send the data elsewhere. It uses register hotkey to define a special keystroke like this. So it's all about functions, the files, the header files, and the DLL files the malware is making interaction with. So what I suggest, prior to give a start to the malware analysis, you should study more about the DLL files, imports and export functions of the Windows. What are the various files and what are the purpose used by these files? Otherwise, you will end up crumbling up how to do the malware analysis because you do not know what these DLL files are used. This is a very common case of keylogger. That's why it's a simple one that you can cram, like Visual 32 is making interaction with your window keyboard or other input devices. But it can get complex when you're going to analyze some malwares that are not subjected to this purpose. Okay. So these 4-5 things were all about the static analysis. हमने malware को code को execute नहीं किया.
इट वॉज सेफ। वो तो आप बिना सेफ एनवायरनमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन की अबाउट यू आर गोइंग टू सेट अप वर्चुअल मशीन और यू आर गोइंग टू सेट अप अ सैंडबॉक्स, अब उसके बिना भी कर सकते हो because you are not executing the malware code. It is of no harm. But it was a part of static analysis. Now, when I say the dynamic analysis, the analysis is done only after you execute the malware code. And the very first step of yours should be a setting up of a safe environment for the analysis. So in dynamic analysis, you run the malware, letting it act on a system while monitoring the acts it performs. To prepare, we made a baseline measurement of the clean system with process monitor and a red shot. I will define what this process monitor and red shot are. The basic फंडा इन द डायनामिक एनालिसिस की आप मालवेयर कोड एग्जीक्यूट करने से पहले पूरे वर्चुअल आपका पूरा जो सिस्टम है उसका स्क्रीनशॉट लेते हो कि उसकी स्टेट क्या है, उसकी हिस्ट्री फाइल्स की कंडीशंस क्या है, क्या बिट वैल्यूज है, क्या रैम यूज हो रही है, वट एवर इट इज, एंड एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा स्क्रीनशॉट लेते हो उसका पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड देन एनालाइज व्हाट द डिफरेंस इट हैज. This is all about the dynamic analysis. And this is a Procmon screenshot. मैंने sysinternals की बात की. Sysinternals is a package of software provided by Microsoft Windows. Procmon, Procmon, is also a small software provided by the Microsoft Windows. Procmon की full definition है process monitor. It is a free tool that you can use. Now, what it shows various functions or various exe files, वो किस ऑपरेशन क्या ऑपरेशन कर रही है, किस पाथ पे ऑपरेशन कर रही है, what is the result, detail everything about the current process going on in your Windows operating system. This tool can be of great help when you are analyzing the malware in the dynamic. Let's say मेरे पास dynamic analysis के लिए कोड आया, मैंने उसको execute किया and then I opened up this procmon and I can observe the exe files that are running on the system. Let's say ये जो isas.exe file इस screen पे show हो रही है, this is a malware. And this proc1 can show what is the path of that file, what is the result, what is the other details that can give you the initial information about how the malware is working. That tool is procmon, and one two more tools are there with the Microsoft Windows. Systems has a lot of tools regarding this thing. Procmon is one of it. And red shot. Okay, let's see. आपके पास एक malware code है, right? Registry files होती है Windows की. Let's take example that a malware code is making interaction with some registry files and changing it some value to 0 to 1. What red shot do, it takes the snapshot, or you can say save the registry values at the time you take the first shot. It has the option of first shot. मैंने malware execute करने से पहले first shot ले लिया, एक shot आ गया पूरा of registry files, right? Not of all Windows operating system, just of registry files. And it converts it to MD5 hash values. इसने short लिया पूरा, उसको MD5 hash values में उसकी सारा डाटा स्टोर कर लिया only of registry files of the Windows. अब मैंने malware का कोड एग्जीक्यूट किया, दोबारा रेड शॉट से सेकंड शॉट लिया, अगेन इसने सब registry files की MD5 hash value की वैल्यूज की लिस्ट बनाई और उसको सेव कर लिया. अब अगर malware किसी registry files के साथ, अगर क्या 90% केसेस में they interact with the registry files. अगर किसी registry file के साथ interact कर रहा है, so obviously that registry file must have gone through some changes, some bit changes, some 0 to 1 value changes होंगे. और MD5 हैश सबको पता है that अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है पूरी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है. लाइक पूरी एक 10 MB की फाइल है, उसमें सिर्फ एक स्मॉल ए की जगह मैं कैपिटल ए कर दूं, पूरी हैश वैल्यू उस फाइल की चेंज हो जाती है. सो इट इज स्टोरिंग द हैश वैल्यूज. एक पूरी फर्स्ट लिस्ट थी हैश वैल्यू की बिफोर टेकिंग द एनालाइजिंग द मालवेयर, और एक एग्जीक्यूट करने के बाद उस सेकंड शॉट लिया उसने. व्हेन यू कंपेयर द टू फाइल्स, यू कैन क्लियरली सी द MD5 हैश वैल्यूज में कौन कौन सी फाइल्स में चेंजेस आए, राइट? लेट्स से एक रजिस्ट्री फाइल है जो आपके स्क्रीन रिलेटेड काम है, उसका ग्राफिक्स के रिलेटेड काम है, राइट? एंड उस फाइल में चेंजेस आ रहे हैं, तो यू कैन गेट अ हिंट कि हाँ ये इस तरीके से
malware is interacting with that registry. So reshort takes the short of the registry files. Reg means registry, short means taking a snapshot. Reshort take the short of the registry files and stores it in the MD5 hash values. वो एज सच फाइल की कंडीशन स्टोर नहीं करता, उनको उनकी हैश वैल्यू स्टोर करता है, बिकॉज वो ये कंसर्न विद द चेंज, उसमें चेंज का है, not with the actual values, right? So that we can convert we can compare the MD5 hash values and conclude that these registry files are getting used by the malwares. Right. तो ये सब जो चीजें मैंने अभी तक डिस्कस की, it's great to start the malware analysis with these points, but in actual industry, जब मैं अगर नॉर्टन की बात करूं या फिर सिमेंटेक कोई जो एंटीवायरस बनाती हैं वायरस के सैंपल से, they do not do all these steps, because अगर आप हैश वैल्यू लेके कंपेयर कर रहे हो इंटरनेट की किसी वैल्यू से, तो इट्स ऑल नाउ फन, वो ऑलरेडी उसका एंटीडोट किसी ने बनाया हुआ है. इट्स द रेस बिटवीन नॉर्टन को, उनके बीच में कंपटीशन है टू एंटीवायरस किसी नए सैंपल का नए बनाना, राइट? सो इन इंडस्ट्री, the higher techniques that are used for making, or you can say analyzing the malwares, is the reverse engineering. Reverse engineering, in the engineering, I don't think BTech has any subject of the reverse engineering, right? MTech maybe I have seen the very few people doing research on it, but I recommend you should go in this domain, because हर मंथ 3000 नए मालवेयर्स के सैंपल इंटरनेट पे रिलीज हो रहे हैं, बट एंटीवायरस की कंपनीज का पेस इतना ज़्यादा नहीं है. हार्डली रिलीज 1 update or 2 update, but comparatively 3000 malware codes are getting leaked. 3000 नए तरीके के मालवेयर हर महीने इंटरनेट पे रिलीज होते हैं. There is a great push in this industry and great opportunity in this industry if you have these skills of analyzing the malwares. And let me give you some statistics. There is a company in Chandigarh with the name Norman Shah, and they are into the malware list, and their starting pay scale is 1.5 lakh. Why? ये हैशिंग करने के, रेशोर्ट करने. The reason is reverse engineering. It is highly difficult task. Starting में, I can give you a description of it, how what is reverse engineering and how you can do it, but it's a great task. And if you are into research field, or if you are into engineering field, whatever you have with you, reverse engineering, or you can say malware analysis, is a great domain to climb in. It's full of interest, and it's full of techniques and knowledge that needs to start the malware analysis. So reversing with IDA and OLI DBG. OLI debugger. DBG stands for the debugger, and OLI debugger is an open source tool for the reverse engineering, right? And what is actually reverse engineering is, आप पूरे exe code को assembly में convert करते हो. Otherwise, when you have a exe code, let's say आपके VLC player का exe code है, vlc.exe, you cannot see how it is interacting with the assembly level पे वो क्या काम कर रहा है, क्या instructions जा रही हैं आपके processor में, how it is working, right? So to get a in-depth knowledge of the malware, how that malware is working, कौन से instructions pass कर रहा है, what are the functions it has, you need to climb in deep into its assembly code. So converting the exe code into assembly code, it's with the help of debugger, and you can use OLI debugger, OLLY, OLI debugger. IDA is one other option, but I should recommend OLI debugger. It's quite simple for the normal users, right? This is the most famous and powerful free tool that I have heard of the reverse engineering. The problem with the reverse engineering is that you will see hundreds of functions in real malware, each containing lots of dense, confusing assembly language instructions. I know it's a difficult thing, but let's say a person is giving research time of 1 or 2 years into this field, and I bet he should have a great future. But this is something जो सभी इसको देख नहीं पा रहे हैं. I guess hardly 5 or 10% लोगों को, I don't know, जो इस सेशन को सुन रहे हैं उनको शायद रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में पता होगा, but still I'm taking a percentage of 5 or 10%, and this is something great, and the requirement of the industry, especially the antivirus making companies. They need the people that have a hand on reverse engineering, right? And obviously it is difficult, each containing lot of dense, confusing assembly language instructions.
but we don't really have to understand 100% of the malware to fight it. That's a very obvious thing. अगर मुझे स्ट्रिंग्स की बदौलत ही सिर्फ इतनी सी चीज पता चल रही है कि वो आईपी एड्रेस पता चल रहा है, दैट इज रीडेबल 14 पॉइंट व्हाटएवर आईपी इट हैज, तो आईपी पता चल गया मुझे, तो मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है. आई कैन मेक मोर फोकस ऑन द रिसर्चिंग की वो आईपी मालवेयर के साथ कैसे इंटरेक्शन बना रहा है, राइट. सो इन मालवेयर एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए यू डोंट नीड 100% हैंड ऑन द रिवर्स इंजीनियरिंग. Basic functions and basic activities, or you can say the basic the things in the malware analysis you have, इतना हो जाए वही काफ़ी है. But still जो कर ले वो बेहतर है. Reverse engineering something that even मेरा शौक भी इस फील्ड में, but still I am not able to put my 100% to this reverse engineering. It is highly difficult. And don't let confusing details slow you down. Scan through the malware looking for strings, process names, or other things you can recognize quickly, and leaving comments to record what you noticed. For most process, all you will ever need is a basic guess of the main purpose. It's like कि हाँ आपको पूरी बुक नहीं पता है क्या है, बुक आपने पूरी नहीं पढ़ी, बट आपको ओवरव्यू पता है कि हर चैप्टर में क्या चीज़ है. यू कैन स्टार्ट द मालवेयर एनालिसिस, बस आपको टॉपिक पता हो ना, हेडिंग बुक की ये हेडिंग है, बाकी थोड़ा बहुत उसमें आप अपनी मेहनत कर सको, तो यू कैन स्टार्ट मालवेयर एनालिसिस विद इट. But for the 100% perfection, reverse engineering is a must thing. Is a must thing. All right. I'm not going into a reverse engineering thing. It's quite lengthy, and I have some time constraint over here. So I am limiting my discussion over to dynamic analysis. As I stated that dynamic analysis, you take the snapshot of the whole operating system and compare it with the situation of the operating system after executing the code. आपने एक स्नैपशॉट ले लिया एग्जीक्यूट करने से पहले पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड दोबारा एग्जीक्यूट करने से पहले एक दूसरा शॉट ले लिया, and then you compare the operating system environments of both conditions, and then you can conclude that this malware is working in this way. So two tools, you can say two platforms that you can use in this thing, OS image analysis, operating system image analysis, is volatility and Mandiant. Now, volatility is an open source. It is provided by the most of the Linux libraries. Volatility आपको freely मिल जाएगा. Mandiant का trial version आपको मिल सकता है, but volatility is the best thing. You don't need to go for the Mandiant red line, right? Okay. Okay, let's talk about the Zeus. Zeus का Zeus, जिसकी मैं एग्जांपल अभी तक ले रहा था, Zeus botnet. It's related to banking thing, and believe me, इंडिया के जितने सिस्टम्स हैं उसमें 50% इससे इन्फेक्टेड है. ये सर्वे हो भी चुका है. All the computers connected to the internet in India, 50% of them are infected with the Zeus malware. और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ब्लैक वर्ल्ड, यू कैन से ब्लैक वेब ऑफ द इंटरनेट, जहाँ पे सेल हो रहा था. हैकर्स इसका कोड बना के सेल कर रहे थे अंडरग्राउंड मार्केट में. It's sold as a kit. Purchaser can customize. Each build is unique, feature rich, botnet control, data stealing, download a rootkit, remote nuke. In short, it does whatever you want to do. और ये फ्रीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो चुका था एक टाइम पे. उसके बाद FBI ने काफ़ी सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था. I guess in a month they have seized around 400 वेबसाइट्स. वो इमीडिएट एक्शन सिर्फ इस बॉटनेट की वजह से हुआ था. And they have arrested around 17 persons around the globe, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से 17 बंदे जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे. And 50% of Indian computers are infected with this. And it's a tragic, you can say, tragic figure that can give you a boost in this industry or the malware analysis. And already companies like Norton and Symantec are lagging people in this domain. उनके पास इस साइड में काम करने के लिए रिसर्चर्स या इस साइड में इंजीनियर्स नहीं है, because no one is aware of that field.
दिस वाज अ केस ऑफ जियोस एंड रवदीप सर आए थे यहाँ पे। रवदीप सर के ब्रदर के साथ भी ये केस हो चुका है। उनके ब्रदर के बैंक अकाउंट से ये सब अमाउंट ट्रांसफर हो गई। It's happened, I guess, 3-4 months back that Raviv sir discussed with me, and probability is there that Zeus was behind that thing. Zeus botnet, right? What if the amount is getting transferred to out of India, to Greece? अगर ग्रीस ट्रांसफर हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? इसके अकाउंट में ट्रांसफर इट कैन बी नोटिफाइड, बट व्हाट इफ इट इज गेटिंग ट्रांसफर टू आउट ऑफ इंडिया? वो बहुत बड़ा जुरिस्डिक्शन केस बन जाता है। वहाँ की लॉ में अपील करो, यहाँ करो, इट कैन टेक मोर देन 20 years to file a case. It happened with the Mumbai police last year. मुंबई पुलिस जो उनको पेमेंट आती है, सैलरी आती है पुलिस के एम्प्लॉइज को, ऑल ऑफ इट गेट ट्रांसफर टू द ग्रीस। वो ग्रीस की एग्जांपल मैं इस वजह से ले रहा था, ग्रीस में ट्रांसफर हो गए। पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, देन दे फाउंड दैट इट हैज ट्रांसफर टू द ग्रीस मोर देन अमाउंट ऑफ 10 crores और 20 crores व्हाटएवर इट हैज। और अभी तक उसके ऊपर केस फाइल करना पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज देयर इज सम कन्फ्लिक्ट्स इन द जुरिस्डिक्शन। हमें पता है, बट हम ग्रीस के उसके नेशनैलिटी के बंदे को उसको केस फाइल करना है, देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन इट। बहुत लंबा प्रोसेस है एंड नो वन टेक इनिशिएटिव टू फॉर इट। सब कहते हैं यार जो हो गया सो गया, अब 10 crore चोरी हो गए, अब 10 crore केस फाइल करने में लग जाएंगे ग्रीस के नेशनलिटी के बंदे के ऊपर, राइट? इट्स अ हेल्थ लॉन्ग प्रोसेस। नॉर्मल ये तो फिर भी बड़े लेवल पे केस हुआ था, छोटे मोटे जो लेवल पे केसेस होते हैं, साइबर पुलिस सेल मोहाली में काफी केस रजिस्टर्ड होते हैं, मोर देन 10 cases a month regarding this bank theft, but still they are not able to cope up with the requirement because there are some conflicts। लॉ भी इतना स्ट्रांग नहीं है, एंड स्पेशली वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल लॉ। मुझे पता है मैंने सिस्टम हैक किया ऑस्ट्रेलिया के किसी बंदे, क्या कर लूंगा मैं? रिपोर्ट लिखवा दी, ओके रिपोर्ट लिखवा दी, व्हाट दे कैन डू नथिंग। अच्छे लेवल पे कुछ अटेम्प्ट होता है, एक्टिविटी की जा सकती है, बट सॉरी बट आई डोंट थिंक इंडियन सिस्टम इज टू मच एक्टिव राइट नाउ एज फार द साइबर लॉज आर कंसर्न। There are some activity taking place in Indian community, but not up to the scale to cope up with the activities, illegal activities that are taking place in the malwares, or you can say in the internet world. And this, I am afraid that कि आपका system भी शायद इससे infected now. Scary truth. Systems of nearly 50% people attending this session are already infected with the malwares. डर लग रहा है, सच्चाई है। And the funny part is, आप खुद इसके जिम्मेदार हो। You yourself are responsible for infecting your system with the malwares. पता कैसे? फेसबुक पे बड़ी चीजें ऐसे निकलती हैं, कोई वीडियो लाइव एक्सीडेंट कॉट इन कैमरा MH17 जो जिसका सेंसेशनल थिंग्स, अंडरस्टैंड? जैसे MS17 क्रैश हुआ था, पता नहीं चला था कहाँ गया। सो हैकर्स ने क्या किया, ऐसा लिंक फेसबुक पे पब्लिश किया, नीचे वेबसाइट को ऑब्जर्व करो, इट्स नॉट ए जेन्युइन वेबसाइट, GAGDAMN gagdam.com। स्क्रीनशॉट ये जो उनने फोटो डाली इसमें लग रहा है कि इट्स अ वीडियो लिंक, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ वीडियो लिंक। फेसबुक में वो कुछ ऐसी चीजें फैलाते हैं, या सोशल नेटवर्क ट्विटर फेसबुक व्हाटएवर इट इज, वेयर इट सीम्स लाइक इट इज अ वीडियो और इट इज समथिंग सेंसेशनल जो आपको इनिशिएट करे, आप उसके ऊपर क्लिक करो। अब ये लाइव एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग कैमरा फोटो बड़ी अपीयरिंग है, काफी अपीलिंग है, 70% बंदे इसको देख के क्लिक करेंगे देखने के लिए, हाँ एक एक्सीडेंट कैसे हुआ। MS17 का जब केस हुआ था, सो उसमें वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी क्यूरियोसिटी थी लोगों में, कैसे हुआ कैसे हुआ। सो ऑब्वियसली अगर मैं कोई ऐसा लिंक डालता हूँ विद द स्क्रीनशॉट जिसपे लिखा हुआ है सी द MS17 गेटिंग क्रैश्ड, the probability is there, 80% will the people on the Facebook will click on this link and they will get redirected to a website that is infected with a malware, and it will download a malware code in your systems, and it is happening। ये सच्चाई है, ये हो रहा है।
ओके कम ऑन, आप में से बताओ कभी किसी ने ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक किया हो? YouTube इज अ ट्रस्टेड साइट, इट हैज लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको वेरीफाई करने के लिए कि वेबसाइट के ऊपर कोई मालवेयर या फिर कोई इन्फेक्शन नहीं है, दे प्रोवाइड असिस्टेंस टू यू। बट यू कैन ट्रस्ट ऑन यूट्यूब और यू कैन फेसबुक, दे हैव सम बिग नेम विद देम, वो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आपकी सेफ्टी को लेकर, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट कोई और थर्ड पार्टी वेबसाइट है, अब उसके उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब इट्स अ वीडियो, वो मालवेयर कोड नहीं है, वो वीडियो है, वो आप अपलोड करके यूट्यूब भी स्कैन करेगा डालने से पहले। इट्स अ वीडियो, इट्स नॉट, ये वीडियो नहीं है, इट्स नॉट अ वीडियो, ये सिर्फ फोटो में दिखाया गया इट्स अ वीडियो, so that people should click on it and get redirected to a third party website which contains some malware, and malware can get downloaded to your systems. It depends. I mean, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हो, अच्छे लिनक्स के नोन हो, तो पहली बात तो आप इंटरनेट चलाओगे लिनक्स पे। मैं कभी इंटरनेट चलाता हूँ लिनक्स के ऊपर चलाता हूँ। इट हैज सम रीजंस, विंडो गिव्स डिफॉल्ट परमिशंस दे देती है एग्जीक्यूशन की, बट व्हेन यू एग्जीक्यूट ऑन द लिनक्स, ऐसे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती उसमें, लिनक्स विल आस्क फॉर द परमिशन। अगर लेट्स से मालवेयर कोड लिनक्स पे एग्जीक्यूट हो भी गया, देन उसकी मेमोरी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि वो जहाँ पे इन्फेक्शन हुई है वहीं तक रहेगी, इट विल नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट टू अदर मेमोरी प्लेसेस इन लिनक्स सिस्टम्स। लिनक्स इज फार बेटर देन विंडोज एज कंपेयर टू फॉर द वायरस थिंग्स, उसमें इतनी जल्दी प्रोपोगेशन नहीं होती। लेट्स गेट टू द पॉइंट कि 50% अगर सिस्टम्स इन्फेक्टेड हैं इंडिया में ऑन द मालवेयर, कैन यू सी द डैमेज रेट, इतना ज़्यादा किस लेवल पे काम हो रहा होगा इस टाइम पे। Denial of service. Now, I will give a quick sneak into this topic, denial of service attack, because there is some relevance of this attack with the malwares. Right? Denial of service attack in a normal layman language, what it is कि आप सिस्टम सर्वर के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, सिम कनेक्शंस आ रहे हैं, HTTP रिक्वेस्ट आ रही हैं बहुत ज़्यादा, and it is getting too much load and that website is down. IRCTC की वेबसाइट हो जाती है डाउन, क्यों? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, सर्वर इतना झेल नहीं पाता, उसका प्रोसेसर छोटा है, राइट। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज व्हाट इट इज कि आप जानबूझ के इतना ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे हो एक वेबसाइट के ऊपर या वेब सर्वर के ऊपर दैट इट इज नॉट एबल टू हैंडल इट, राइट। A denial of service attack is characterized by an explicit attempt by attackers to prevent legitimate users of a service from using that service. और फ्लड कर देते हो कनेक्शंस। TCP थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस होता है, नेटवर्किंग के लोगों को पता होगा, राइट। उसमें सिन होता है, देन सिन प्लस एक आता है, वापस दोबारा हम मैक भेजते हैं, थ्री वे हैंडशेक। नाउ व्हाट इफ अगर मैं सिन को फ्लड कर दूं, क्या होगा अगर मैं सिन को 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड के हिसाब से भेज रहा हूँ? इट इज समथिंग लाइक दिस, सिन फ्लड अटैक that is used to denial of service on the web servers. Proper process is like sin, then coming back sin plus act, then act. मैं अगर 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड की स्पीड से सिन भेज रहा हूँ सिर्फ, द सर्वर विल गेट बिजी इन सेंडिंग बैक act and obviously will not able to handle so much of request with such a fast speed and ultimately will crash. I'm not going to too much depth of this DOS attack because this is not my topic today, but still this has some relevance with the malware, that's why I'm discussing this topic. Okay, तो इस DOS को रोकने के लिए एक solution प्रपोज किया गया and the solution was filtration on the basis of IP address. अगर मैं नॉर्मल यूजर है, लेट्स से यू आर देयर, यू आर एक्सेसिंग द यूट्यूब, आप यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी सिस्टम से यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई यूट्यूब को या दो गई मैक्सिमम विद 1 or 2 मिनट्स, राइट। अगर एक मैं एज एन अटैकर उसके ऊपर 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड के हिसाब से भेज रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यूट्यूब कैन अंडरस्टैंड दिस, दीज 1000 रिक्वेस्ट आर नॉट लेजिटिमेट, फेक हैं, ये कुछ और पर्पस के लिए भेजी जा रही हैं, एंड दे कैन ब्लॉक मी ऑन द बेस ऑफ द IP एड्रेस. So the solution for this, to stop this DOS attack, was proposed in this way, that the implementation of filtration on the base of IP address, right? Because flood of SYN packets was originating from a single IP.
ये था solution. We are security guys, and this was our solution. Then coming to blackboard hackers, what they did, they find a way to randomize the IP address. 1000 request per second के हिसाब से भी जा रही हैं और IP address भी random हो रहा है, so that they can't filtration methods that the website has implemented or the server has implemented, that they can't observe that the IP is the traffic is coming from a one single machine. It will be from one single machine, but the IP will be randomized. It can be done. So it's a continuous conflict between the hackers and the security persons. Security persons find a new way to tackle, and within 2-3 months, the hackers find a new way to hack. So this was a solution, and then the attack by the hackers in a new way. And again, hackers said that they can randomize the IP address to for the DOS attack. Now again, on the security side, the implementation was proposed in this way: Smart IDS and IPS intrusion detection system. IDS stands for intrusion detection system and IPS stands for intrusion prevention system. They can identify the attack on the basis of signatures. That was the first solution to the traffic coming from the randomized IP address. And the second solution proposed was the load balancers. Now, what load balancers are? Load balancer balances your traffic in parallel with the different web servers connected to it with a common database. जहाँ पे let's say Flipkart है, let's talk about a Flipkart. पहले चीज आई, उन्होंने एक सिंगल सर्वर रखा, ठीक है, जिसके कुछ नहीं लगा हुआ. नाउ सिंगल पर्सन, मैं अभी उसके ऊपर अटैक कर उसको डाउन कर सकता था. Then they did a filtration method, filtration on the basis of the IP address. IP address का एक solution लगा दिया. Now what I did, मैंने IP address अपना random कर लिया. Still I am able to attack. फिर उन्होंने क्या किया, IDS IP systems लगा दिया. मैं अब IP random नहीं कर पा रहा. And the ultimate solution then they proposed is load balancers. Load balancers balance the load between the web servers. उन्होंने अपने servers increase कर दिए to increase the processors, number of processors, to divide the traffic between the servers, right? This was the final solution that the security persons have identified till now, except IDS and IP systems, to prevent from DOS attack. And as I said, there is a continuous conflict between the hackers and the security guys. हम कुछ solution निकालते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ नई techniques निकल आती हैं, right? So why I started this topic of DOS attack? Because अब hackers कुछ कर नहीं पा रहे. वो IP address भी random कर लेंगे, तो वहाँ पे load balancers लगे हुए हैं, वहाँ पे IDS IPS लगा हुआ है. They are not able to do DOS attack. So what they did, उन्होंने malwares फैलाने शुरू कर दिए. And they are controlling your systems to make a DOS attack. Obviously, अगर हम सारे बैठे हैं यहाँ पे, let's say 100 people are there and 100 out of 100, 90 people systems are infected with the malwares, and उन सब के system से 60 request per second के हिसाब से जा रही है. It's nearly 5400 requests per second. They can control your system to make a DOS attack on any server or any machine. And the screen that you are visible with, zombie systems are in millions and still increasing. We use the terminology zombie system for the systems that are infected with the malwares and are getting used by the hackers for the DOS attack. And Bulgaria has 4.9 ratio of infected zombie systems. And France, Taiwan, Israel, South Korea, Italy, all these countries, this much percentage of systems are zombie systems. अब मुझे किसी लेट्स से मेरे पास इन सारे zombie systems के बीच में जो भी malware है, उस malware कोड को मैं ट्रिगर कर सकता हूँ to send a request to send flood of request on the servers, right? Let's say Flipkart है, अब मेरे हाथ में ये सारे zombie systems का कंट्रोल है.
I can still can DOS on the Flipkart, चाहे वहाँ पे IDS लगा है, चाहे वहाँ पे IPS लगा है, चाहे लोड बैलेंसर्स लगे, बिकॉज लोड बैलेंसर्स लगे हैं तो उनकी भी तो कोई लिमिट है। हाँ, लोड बैलेंसर्स लगाने। सो व्हाट इज द लेजिटिमेट, अगर सेल लगी है फ्लिपकार्ट के ऊपर तो ऑब्वियसली अगर मैं लेट्स से ऑलरेडी सेशन फुल है, मेरे को शॉपिंग करनी है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो मैं सेशन नहीं लगा पाऊंगा। ऑब्वियसली लेजिटिमेट यूजर्स एंड नॉन लेजिटिमेट यूजर्स, यू कांट डिफरेंशिएट इट विद देम। This is a huge, you can say, tragic thing that happening, and it's a great field to research how to prevent DDoS in that case, because it is now happening at a larger scale. अब एक hacker का काम नहीं है, they have infected millions of computers and they are using the millions of computers for the further DOS attack. Obviously, yes. That's what I'm saying. This is a field of research. This is a field of research. Why anonymous? Anonymous जब दिल चाहता है किसी की वेबसाइट डाउन कर देते हैं, कैसे कर सकते हैं वो यार? CNBC की है कोई, वॉट एवर द केसेस दैट इज हैपनिंग, उनके सिस्टम्स में तो आईडीएस लगे हैं, उनके सिस्टम्स में तो लोड बैलेंसर्स लगे हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू डॉस अटैक। व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्प्रेड द मालवेयर्स अमंग यू एंड अमंग मी, एंड दे आर यूजिंग योर सिस्टम्स टू ट्रिगर द डॉस अटैक। आपके सिस्टम से वो फ्लड हो रहा है, और अगर 1 मिलियन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, 1 मिलियन कंप्यूटर से वो फ्लड कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 30 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, इट्स 30 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड। I don't think there is any server that can handle 30 million requests per second. Obviously, that it will crash. That's what I'm saying. It is a topic of research on DDoS prevention. Lots of theoretical work is done. Theoretical paper बहुत हो रहा है, हर महीने कोई ना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होता है इसके ऊपर, but that's not enough. Practical implementation is too much less in this field, and it is generally required. This is a general scenario of denial of service attack that is shared on the screen. How the attacker is using internet to spread the malware, and then using your systems called as zombies to make a DOS attack on the target server. Well, only if you are a cybersecurity guy and only if you are a malware analyst. Only that case. Obviously, it needs some knowledge and it needs some analyzation to see if it is happening or not. अगर कोई रिक्वेस्ट जा रही है आपके सिस्टम से, you should open up Wireshark. Wireshark is a network packet analyzer tool. You can see Wireshark में कौन कौन सी रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से किस नेटवर्क आईपी पे जा रही है. Still, it will not be enough. You should make a more research on it, why it is happening. But believe me, 50% computers are into it. ये सब हो रहा है. Normal, आप चलो ठीक है इस डोमेन में हो, but what about your family, your parents? They are not into computer science field. वो तो जो लिंक देखा क्लिक कर दिया. It becomes too hard to identify and then analyze the malwares. But this is something happening in the real world, and तभी जब दिल चाहता है एनोनिमस जैसे ग्रुप्स है किसी को भी डाउन कर देते हैं वेबसाइट को. The reason is this, because they have spread the malware with the backlink, giving the back shell to them, and they can control the systems to send the DOS flag. DDoS and malwares are pretty much close to each other. One of the most notorious example of an HTTP GET attack was from the MyDoom worm. Now this is an interesting case that happened. हुआ क्या, एक worm था. Worm is again a terminology used for a variety of malwares. Right? MyDoom नाम था उसका, and वो एक हैकर ने, जैसे फेसबुक का मैंने केस बताया आपको, फेसबुक में ऐसे फोटोज दैट आर लुक्रेटिव टू क्लिक ऑन, राइट, वो ऐसे एक वेबसाइट बनाई, उस पर लोगों को फैलाने के लिए फेसबुक ट्विटर की हेल्प ली उस हैकर ने, एंड ऑलमोस्ट उसने एक महीने में नियरली 1 मिलियन सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर दिया था. अब उसके हाथ में 1 मिलियन कंप्यूटर कंट्रोल में थे, and that hacker has some conflict with the owner of the SEO.com. और SEO.com एक वेबसाइट थी, उसके ओनर के साथ वो हैकर का कुछ कन्फ्लिक्ट था. उसने बदला लेने के लिए क्या किया, उसने ये माईडूम वर्म स्प्रेड किया, जिसके सिस्टम में भी ये इफेक्ट करता था, उसके सिस्टम से
64 रिक्वेस्ट जाती थी एक सेकंड में. लेट्स से आई हैव टेकन अ एस्टिमेट ऑफ 1 मिलियन पर मंथ. उसने स्प्रेड कर दिया था 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 64 request per second. It's 64 million requests per second going all over the world to a website of sco.com. क्या होगा? खुलेगी नहीं वो वेबसाइट. It's down, crashed. 64 requests were sent every second from every infected system. With tens of thousands of computers estimated to be infected by my doom, the attack quickly proved overwhelming to sco.com, knocking it offline for several days. काफी दिनों तक वो offline हो गई थी website. So now the game is quite difficult. पहले malware analysis एक totally different field होती थी, but now hackers are using malwares to spread the infection in a way that can help them to DOS or DDoS the systems. And it's a great field to research with. Theoretical research are not up to scale. Research paper, I have studied a lot of research paper in this domain, but I am not satisfied with any of it. So I should recommend you to go into a domain of malwares and the DDoS stack and see what you can give to the community with your knowledge. क्या पता आपको कोई solution निकला है. So that's all for today. Malware analysis and a DOS stack thing. And I hope you enjoyed these 2 hour session in the malwares. And this is my website link, email ID info@cyberanalysis.in, and my phone number with it. If you want to discuss more on it, how you want to go ahead with malwares, how you want to propagate, if you need any help in research as well, then you are most welcome. And I appreciate the act of involving in the research sector of the malwares and the DDoS attack. Thanks a lot.